Welcome dear students to class of mathematics. I hope सब ठीक होंगे. I hope सब ठीक होंगे. आपने प्रैक्टिस की होगी जो हमने कल परसों सीखा है, multiplication and product of these binomials. Dear students, we are studying algebraic expressions and algebraic identities. Till now, we have taken up algebraic expressions. Primarily, we have understood what algebraic expressions are, what expressions are. Expression contains these terms. हमने इसको सीखा है, हमने expression को समझा है, हमने monomials and binomials का addition और हमने इनका multiplication and ultimately हमने कल परसों multiplication of binomials सीखा है. Now let us continue with our exercise and application of this. Before that, let us recap the FOIL process that we employ for solving product of these binomials. फिर से repeat कर रहा हूँ. In this process, what we do, we have an expression. Let us say we have here 2x plus 3 and another expression is 5x minus 8. So we are employing here a process that is F, O, I and L. F stands for first terms. This is 2x is first term and 5x is first term. Here we have written here 2x and 5x. Then we have outer terms. So what are outer terms? This 2x is outer term and minus 8 is outer term. Outer term जो बाहर की तरफ है, ठीक है. Then we have I, it stands for inner terms, ठीक है. Inner terms जो expression के अंदर की तरफ है. So we then find product of these inner two terms, that is 3 and 5x, and ultimately the last term of first expression and last term of second expression. We have employed this और हमने इसको दो चार क्वेश्चंस पर अप्लाई भी किया है. मैं रिकैप कर रहा हूं. यहाँ आप इधर देख रहे हैं, these are first terms shown in blue, shown with pink are the outer terms, shown with red here are inner terms, and with again blue here we have last terms. Then for past 2 days we have been solving exercise 9.4. Dear students, here we employed this FOIL process, or we can say a method, and we completed question number 2. This 2 stands completed. Let us now apply the process on question number 3. And be sure the question number 3, these parts of question number 3 are important और ये एग्जाम में दिए जाते हैं. हम इस प्रोसेस को यहाँ इस्तेमाल और एम्प्लॉय कर रहे हैं. Now let us do it. We have part 1. Expression क्या है? Expression is x square minus 5. And another expression we have x plus 5 and we have plus 25. अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या है? We have first expression, we have second expression, and then we have plus 25, a constant. Let us employ the process here. F, O, I, and L. F stands for the first terms of both expressions. So we have here x square. So find product of x square and the first expression of this term. First term of, this expression, this is x square multiplied by x. You see bases are same.
Now, what we need to do, this is an expression itself. This is a term in x. This also is variable x. Bases are same, 2, and this has power 1. 2 plus 1 becomes 3, so it becomes x cube. X square multiplied by x turns out to be x cube. Let us solve outer terms. We have -5, we have -5, and we have +5. Okay. Minus plus turns out to be minus, and 5 5s is 25. Let us solve inner terms. We have -5, you have -5, and we have x inner terms. These two terms are inner terms, and x. अब देखिए इसको क्या कहते हैं, -5 एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड बाय x. ठीक है, अच्छा कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 1s is 5, 5 2s is 10. मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 3s is 15, 5 multiply a is 5, 5 multiplied by x is 5x. ठीक है, -5x, and we have at the end the last terms. We have -5 and +5. सॉरी, मैंने इधर आउटर में मैं इधर करेक्शन कर रहा हूँ, इधर ये करेक्शन हम कर रहे हैं. आउटर टर्म में हमको ये लेनी है x square. These are outer terms, x square and +5. ठीक है, it is +5x square. And in last terms, this is last term of first expression. This is -5. And last term of second expression, that is +5. We have -25. ये हमारे रिजल्ट्स बन गए. 1 2 third term and fourth term. We write it here: x cube plus 5x square minus 5x minus 25, and at the end we have this 25 plus 25. We have this 25. Here we can make cancellation. Okay? We can cancel +25 and -25, and we can check for like terms. Let us see if we have like terms here. Let us see if we have like terms here. Excuse me, where student here. This is cube, x cube. We have then square. This is 5x square, and ultimately we have -5x. We have here cube, we have here square. This is power 1, so there are no like terms here, and the expression is, sorry, here the result जो हमारे पास आंसर बन गया. हमने फिर से इधर FOIL, ठीक है, इस्तेमाल किया, ये प्रोसेस इस्तेमाल किया. इससे मल्टीप्लिकेशन इजी भी बनता है. फॉर बिगिनर्स जिनमें डिफिकल्टी पाई जाती है कि क्या मल्टीप्लाई करना है, ये एक्रोनिम याद रखिए, ये सॉल्व होता है, बड़ी आसानी से सॉल्व होता है. जस्ट गिव मी 5 seconds. Now let us come to part 2. We have part 2 here. It is a square plus 5, b cube plus 3, and we have plus 5.
अब आप बताइए, we have here F, O, I and L. आप बताइए फर्स्ट टर्म्स कौन सी हम लिखेंगे इसमें से? Sir, a square and b cube. Yes, it is a square and first term a square and b cube. ठीक, अच्छा जी, हमने a स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है b क्यूब के साथ. ठीक, आप इस बात की तरफ फिर से ध्यान दीजिए. We have to multiply a square and that too with b cube. A is one quantity and b is another quantity. These are two different kinds of variables. अगर ये सेम होते, हमने क्या करना था? We would add power, but it is a square and b cube, and that too coefficient of a square is 1 and coefficient of b cube is 1. Okay, see, we write it here, a square b cube. Coefficient 1 multiplied by coefficient 1 is coefficient 1. ठीक, 1 1 is 1. A square multiplied by b cube is a cube b cube. Now let us see outer terms. अच्छा जी, outer terms जहां मेरे पहले से गलती भी हो गई थी. outer terms, ठीक है, दोनों एक्सप्रेशन के outer terms. We have a square, yes, a square, and we have here 3. this plus 3. अच्छा जी, हमने इधर साइन लिखी, इधर नहीं लिखी. ठीक है, ये जो यहाँ a स्क्वायर है यहाँ पॉजिटिव है तो लिखने की जरूरत नहीं है. b क्यूब है पॉजिटिव है, लिखने की जरूरत नहीं है. प्लस साइन जब हमारे पास होते हैं ये लिखने की जरूरत नहीं भी है. यहाँ हम प्लस 3 के बदले 3 भी लिख सकते हैं, बट लेट इट बी. अच्छा जी, a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3. 3 multiplied by a square is 3a square. ठीक है, and we have inner terms. अब अंदर वाली terms, that is plus 5 and b cube. You see, that is plus 5 and it is actually plus b cube. हमें सिर्फ ख्याल तब रखना है when we have negative signs. 5 into b cube is equal to 5b cube. And we have last terms, both expression, the last term, and that is plus 5 and plus 3. Plus is result plus 5 3s is 50. अच्छा, आप देखिए प्लस ये भी प्लस है. ठीक है, मैं इधर टॉप राइट कॉर्नर में लिख रहा हूं. When we have two quantities with negative signs, the result will be plus. If we have two quantities with positive sign, the result will be plus. The only case when we have negative result is when two quantities are having two different signs. When one quantity is positive and another quantity is negative, the result will be negative. आप इधर देख सकते हैं, हम इसको अप्लाई कर रहे हैं. This is positive, the result is positive. A square is positive, 3 is positive, the result is positive. ठीक है, ये दोनों भी positive हैं, the result is positive. Now we have to write these 4 terms here. It is a square b cube plus 3a square then we have plus 5b cube and plus 15. अब इसमें से आप चेक कीजिए कि लाइक टर्म्स कौन सी हैं. दिस इज
a square b cube, 3a square, 5b cube and 15. 4 different terms. ठीक है, 4 different terms. कहीं पर भी वेरिएबल सेम नहीं है. If this is a square b cube, this is b cube. A square b cube is one different quantity than b cube. B cube is totally different quantity. So there are no like terms, hence no addition or subtraction of like terms. These are totally unlike terms and we keep the result as it is. अब याद रखिएगा हमने इधर FOIL अप्लाई तो किया, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए प्लीज. We have 4 different quantities here. We apply FOIL, FOIL process. क्या अब हमें ये प्रोसेस हर एक पार्ट, हर एक क्वेश्चन पर अप्लाई करना है? No, never. But there is a logic. अच्छा जी, लॉजिक क्या है? आप रिपीटेडली 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस पर अप्लाई कीजिए. दिमाग में एक मैप बनता है, ठीक है. न्यूरॉन्स एक तरह से काम कर रहे हैं कि भाई ये प्रोसेस है. अल्टीमेटली आपकी इसमें मैस्ट्री हासिल होती है एंड देयर आर लीस्ट चांसेस ऑफ मिस्टेक. लेट अस मूव टू पार्ट 3. ठीक, t plus s square and we have t square minus s. Let us do it on another page. We have part 3 and it is t plus s square and t square minus s. Okay? Let us solve it here. ठीक, we write FOIL. It equals. Please give me 5 seconds. Again, we have first terms, that is first term of this expression, that is t, and first term of second expression, that is t square. बताइए आप t multiplied by t square, यहाँ वेरिएबल सेम है, बेसिस सेम है, सॉरी बेसिस सेम है, t and t multiplied by t square, it has power 1, this is power 2, it becomes t cube, t power 3, we say t cube. Let us see outer terms. ठीक है, outer terms. So ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ, t multiplied by minus s. T multiplied by minus s. T is one quantity, s is different quantity. T multiplied by s is ts. ठीक, आपको दो क्वांटिटीज को साथ में रखना, ts. बट यहाँ आप ख्याल रखिए, this is plus, this is minus, the result will be minus. So it is, we write st. Why we write st? मैंने repeatedly पिछले दिनों भी कहा कि we write in alphabetical order. That is the proper way. Repeatedly मैंने ये पिछले दिनों से कहा है. We have now inner terms. These two are inner terms. It is plus s square. It is plus s square, and we have to multiply it with t square. This is s square, another is t square. Put them together. Plus plus becomes plus.
कोफिशिएंट दोनों में कोई नहीं है, वन वन इज वन, और वन लिखने की जैसा कि मैंने कल कहा जरूरत नहीं है। एस स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, इट इज एस स्क्वायर एंड टी स्क्वायर एंड वी हैव लास्ट टर्म्स, एक्सप्रेशन की लास्ट टर्म्स, ठीक है, इट इज एस स्क्वायर एंड माइनस एस। दिस इज द लास्ट टर्म, मैं इधर एरो कर रहा हूं, दीज आर द लास्ट टर्म्स, प्लस एस स्क्वायर and we have minus s. Plus minus turns out to be minus s square and s is s cube. We got the result. So we have t cube minus st, ठीक है, आप यहां देखिए, minus st, then we have plus s square t square and minus s cube. This is the answer. We arrived at the solution of these expressions. इनका प्रोडक्ट हमने किया, we have arrived at conclusion. But हमने कल या परसों मुझे याद है एक बात की थी कि हम हाईएस्ट पावर को पहले लिखते हैं जनरली, या तो पावर्स हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। मैंने परसों भी कहा था, वी राइट एज वी हैव हियर द सिस्टम, वी राइट द हाईएस्ट पावर फर्स्ट। अब देखिए टी क्यूब एंड एस क्यूब, टी क्यूब एंड एस क्यूब, नाउ दैट एस कम्स फर्स्ट वी राइट माइनस एस क्यूब। दिस इज आंसर। आप यहां आंसर लिख सकते हैं, नो नीड टू वरी अबाउट, दिस इज एग्जैक्ट आंसर। अब क्या है, इस आंसर को खूबसूरत बनाना है। वी हैव माइनस एस क्यूब प्लस टी क्यूब, देन वी हैव प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर, एंड देन वी हैव माइनस एस टी। दिस इज आंसर। ये बात मैंने कल भी कही थी, परसों भी कही थी, कि जब हम एक्सप्रेशंस को लिखते हैं, ठीक है, हम मतलब इनका सॉल्यूशन हम देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं, या तो हमें पावर जो है, पावर्स जो इन टर्म्स की हैं उनके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो पहले कांस्टेंट आएगा, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो पहले जैसे पहले क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर पावर वन एंड अल्टीमेटली कांस्टेंट्स। जो हमारे आसपास के इधर सॉल्यूशंस हैं, बुक्स है, जो भी है, अब देखिएगा उसमें पहले हाईएस्ट पावर है, ठीक है। Please keep these things in your mind. Let us, we have a little bit time. Let us do one more. We have part 4. We have part 4. We have part 4. लंबा चौड़ा है. We have a plus b. जल्दी से करते हैं। We have a plus b and c minus d. Then we have plus. अब देखिए we have plus. We have a minus b and c plus d. Then we have plus 2 times ac plus bd. बहुत लंबा चौड़ा है। Equals. तो मैं जरा इधर से पेज यूज करता हूं। So फर्स्ट वी यूज FOIL। अब देखिएगा हमें इधर भी इस्तेमाल करना है फाइल प्रोसेस, फिर इधर भी इस्तेमाल करना है, अल्टीमेटली इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। फर्स्ट वी विल अप्लाई द FOIL acronym here. First terms, that is A multiplied by C, that is A multiplied by C, it turns out to be AC. Then outer terms, that is A multiplied by minus D. A multiplied by minus D, it turns out to be minus AD. Then we have inner terms, that is plus B and plus C.
this is B and plus C, ठीक है, that is BC, and we have last terms, that is plus B and minus D, plus B and minus D, ठीक मैंने लिखा, plus B and minus D, that is minus BD. Oh, sorry. Sorry. Okay, excuse me. We are solving this. This is minus, मैं इधर लिखता हूँ, वह minus BD, मैं इधर लिखता हूँ, स्पेस थोड़ी सी कम पड़ेगी. So we have these four things, that is AC minus AD plus BC minus BD. Okay. I put these things in brackets. Why? We have here sign of addition. Then I have again these two binomials. I write F, O, I and L. So first terms कौन सी है? First terms कौन सी है? That is A and C. A and C. It turns out to be AC. Outer terms कौन सी है? That is A and D. It turns out to be AD. Inner terms we have minus B and C. That is minus BC. मैं इधर लिख रहा हूँ. Minus BC, and last terms we have minus B and D. Minus B and D. That turns out to be minus BD. ठीक है? I write these four terms here. It is AC plus AD minus BC minus BD. And ultimately I have plus here. ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ. 2 multiplied by AC, it turns out to be 2AC. And 2 multiplied by BD plus, that is 2BD. ठीक, I have 2BD. इनको ब्रैकेट से बाहर करते हैं, फिर जाके लाइक टर्म्स देखते हैं. I have AC minus AD plus BC minus BD plus AC प्लस से मल्टीप्लाई करने पर साइन पर कोई असर नहीं पड़ता है, साइन जो है वही लिखनी है. वे हैव प्लस AD, ठीक है. वे हैव माइनस BC माइनस BD प्लस 2AC प्लस 2BD. ठीक. Let us see like terms. We have this AC and plus AC. It is 2AC. Then we have minus AD and plus AD. It cancels out each other. We have plus BC and minus BC. ठीक है? We have minus BD and minus BD. It turns out to be minus 2 times BD. Then we have plus 2AC plus 2BD. Okay? Let us put this as an answer. Please see it again. I put out this as the answer. Having less time, we are required to end this class. Thanks for being here. Tomorrow it will be again the next class.